Okay, so we can go ahead, Shivani. Okay, ma'am. Courage, sacrifice, determination, commitment, toughness, heart, talent, guts. That's what a little girl are made up of. The heck with the sugar and spice. Good evening to everyone present here. My name is Shivani Kumari. I am a second year student of BA program at Deshbandhu College and also the volunteer of NSS unit. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion of National Girl Child Day. The purpose of celebrating this day is to raise awareness about the rights of the girl child. All people, including the daughters, must be aware of must not be aware of the discrimination experienced by the girl child. Now, I would request Manasvi to come over for Saraswati Vandana. Over to you, Manasvi. Thank you, Shivani. I would request each one of you to please join hands and close your eyes for Saraswati Vandana. Ya kundendu tushar har dhavala, ya shubhra vastra vruta, ya veena vardand mandit kara, ya shvet padmasana, ya brahma shuddh shankar prabhuti devai sada vandita samam patu saraswati bhagavati nishesh jatya paha. Thank you, Shivani. Thank you, Manasvi. You all must be wondering what exactly is National Girl Child Day and why is it celebrated? To get a brief information, I would like to invite Harsh. Over to you, Harsh. Okay, am I audible? Yes, you are. Okay. जिस देश में होता है नारी का सम्मान, वह देश होता है स्वर्ग के समान. Under the Government of India's initiative to celebrate and commemorate 75 years of India and its glorious history, Azadi Ka Amrit Mahotsav, we the volunteers of NSS unit Deshbandhu College are celebrating National Girl Child Day. National Girl Child Day is observed on 24 January every year as National Working Day for Girl Child. This celebration was started to give more support and new opportunities for the girls in the country. Discrimination with the girl child is a significant problem that is spread in many areas such as inequality in education, legal rights, security, respect and child marriage. बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का दो इसको अधिकार. The Ministry of Women and Child Development celebrate National Girl Child Day from 2008 countrywide. During this, a range of advertisements are run by the government through the message Save the Girl Child on radios, TV stations, local newspapers, etc. NGOs and non-governmental organizations also come together and take part in this festival to fight against this social stigma about child. सजा नहीं सपना है बेटी, गैरों के बीच अपनी होती है बेटी, रंगों से सजाती है आंगन को, वेदना नहीं वरदान होती है बेटी, वजूद उसका कभी मिट सकता नहीं, दूर नहीं जीवन का सार होती है बेटी. आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद. Thank you, Harsh, for the information. Every day brings new thought, new words, new strength, and endless possibilities. To enlighten us and brighten our evening, I would like to invite Naila for speech. Over to you. So, am I audible? Yes, you are audible. Okay. For a society to excel in every aspect, or for a nation to keep pace with time and develop in every field, there needs a strong, compatible, and skilled human resource.
And that is only possible when we promote equality, an equality present between men and women. As it is rightly said, that I raise up my voice, not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot all succeed when half of us are held back. And we can wisely sense which half of the human race is held back. Good evening, everyone. My name is Naila Kamar, and I am a student of BA English Honors. Today, I am going to speak about National Girl Child Day. National Girl Child Day is observed on the 24th of January to combat social discrimination and exploitation girls face every day in their lives. The Women and Child Development Ministry started this day in 2008 with the purpose to spread awareness among people about all the inequalities girls face in Indian society since ages. Today itself, we should ask ourselves a question. Do girls in India enjoy equal rights in every aspect as boys do? And surely we won't be able to give it 100% yes, because till date, in order to provide equal rights and privileges and to spread awareness, we observe a day called as National Girl Child Day. And we all know that a single day won't be enough to fill up the space of discrimination present in the lives of girls. It is amazing that even after these many years of independence, we come across cases of dowry death, female feticide, gender discrimination, and withdrawing of girl child from school. Till today, almost half of the population do not treat girls like human beings. Everyday newspapers are flooded with such kind of news. It is very appropriately said that every man needs a mother, a wife, a sister, but not a daughter. This is something to which we should give our ears. We should not just feel pity or sympathize the situation of a girl child, but also need to consider that this needs to stop. It is very clear that a girl child always become a blessing for the society and a reason for the continuation of life in this world. People worship female goddesses at various festivals, however, never feel the need to give the respect to women living in their homes. People want educated daughters in law, but think several times before educating their daughters. How long would this go on? And with that being said, I need women and especially girls to pull their socks up and change their mindsets too. Don't ignite the flames of so-called perception that girls are weak. Instead, showcase your power, think strong and act strong. Take courage and speak up against evil discrimination and stand up on your behalf because no one else is going to do so. As William Golding has famously quoted that, I think women are foolish to pretend they are equal to men. They are far superior and always have been. Thank you. Thank you. Moving forward, as we know, volunteer of our unit never miss a chance to showcase their talent. So I would like to invite Harsh Sharma for a self-composed poem. Over to you, Harsh. Am I audible? Yes. Good evening, everyone. My name is Harsh Sharma. I am pursuing BSc Industrial Chemistry, and I am an NSS volunteer. I'm going to recite a self-composed poem. Hope you all like it. लड़कियां हैं समाज की नींव, बनाती हैं भविष्य की तस्वीर. मन में इनके हैं लाखों सवाल, पर दबा कर रखती हैं अपने विचार. हमेशा सोचती समाज क्या कहेगा, क्या कोई अब मेरी भी सुनेगा. परिवार में तो मैं बंध गई, पर पता ही नहीं चला कब पूरी जिंदगी गुजर गई. पहले सोचा था मैंने मैं भी हूं दुनिया में, पर लड़कों की भीड़ में मैं तो कहीं दब गई. बेटा, जमाना बहुत खराब है, सुनते सुनते हमेशा चार दीवारों में ही जकड़ गई. मेरी भी थी सपनों की उड़ान, पर वक्त के साथ वो जमीन पर ही कहीं बिखर गई. पर अब मैं चाहती हूँ बदलाव, ताकि हो सके नन्ही परियों का जीवन आबाद. समाज से हटानी होगी ये लकीर, तभी लड़कियां लिख पाएंगी अपनी तकदीर. थैंक यू. हैप्पी गर्ल चाइल्ड डे. Thank you, Harsh. I request Himang to share his screen and present a video. This would include feelings of a girl child and what they can do if equal opportunities are given to them. That is, it will be followed by a brighter future wall consisting of few girls who have done wonders in recent times. Over to you, Himang.
माँ, अगर मैं मेरा नाम अंजलि से अनुज कर दूं, तो क्या तुम मुझे आगे पढ़ने दोगी? अगर मैं अपना नाम राधिका से राहुल कर दूं, तो क्या आप मुझे किसी दूर शहर पढ़ने भेजोगे? बाबूजी, अगर मैं अपना नाम रीता से रितेश कर दूं, तो क्या आप लोग मुझे नौकरी करने दोगे? सपने हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों को ही क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? माँ, मैं शीतल से शेखर नहीं, शीतल बनकर ही आपका ख्याल रखूंगी, आपका नाम खूब रोशन करूंगी। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। Thank you, ma'am. Moving forward, I would like to invite Dr. Aparna Nautiyal, ma'am, Associate Professor, Department of Botany, Deshbandhu College, for the welcome note and enlighten us all with her words. Over to you, ma'am. Thank you, Shivani. Am I audible? Yes, ma'am. Namaste and good evening to all of you. On behalf of Deshbandhu College, I, Aparna Nautiyal, welcome you all to celebrate today's special occasion of National Girls Child Day, that is on 24 January. I extend my warm wishes and congratulate each girl present here in the audience, whether she is a doting mother, a daughter, a sister, a wife, a grandmother, or having any relation or carrying any relationship as a female. My heartfelt and best wishes to all of you. On behalf of NSS unit, Deshbandhu College, I extend sincere gratitude to our dynamic principal, Sir Professor Rajiv Agarwal, Vice Principal, Sir Professor Kamal Kumar Gupta, and IQAC convener, Dr. Aditya Kumar Saxena, who have been guiding force to all the students as well as the teachers. I also warmly welcome our chief guest, Dr. Anshu Joshi, for today's session. Welcome to you, ma'am. And thank you for sparing your valuable time for today's talk. I also congratulate and express my gratitude to our hardworking, multitasking NSS coordinator, Dr. Ruby Mishra, ma'am, for organizing all the activities of NSS so efficiently, and also to give me an opportunity to welcome our chief guest today. Behind all the hard work and successful performance being showcased in all the activities of NSS of our college, there is the NSS
full-fledged, enthusiastic team of students comprising of President Ms. Kirti Virmani, Secretary Asha Lakra, Women Empowerment Heads Mansi Karwal, Anushka, and other student volunteers. I congratulate each one of you for making our NSS team as one of the best amongst all the colleges. My best wishes to all of you for all the future endeavors. Today, as all of us have gathered to celebrate the National Girl Child, which is marked to spread awareness about the social issues like girls' education, right to equality, women empowerment in our Indian society. This initiative of celebrating 24 January as the National Girl Child Day was started by Ministry of Women and Child Development since 2008 to take up the issues related to girls in our society. Though this day has been marked as the National Girl Child Day every year, but in reality, no day is there in our life without the existence of a girl or woman. In fact, it is a female that makes our place a home in real sense. In our ancient manuscripts, it is also mentioned, Yatra naryastu pujyante ramante tatra devtaha, yatra tastu na pujyante savastatra phala kriya. अर्थात जिस स्थान में नारियों की पूजा व आदर सम्मान किया जाता है, वही समाज व परिवार देवताओं की कृपा, उसी समाज या परिवार को देवताओं की कृपा मिलती है। वह जहां ऐसा नहीं होता है, वह नारियों का अपमान होता है, वहां देवताओं की कृपा नहीं होती, वह सारे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। वेदों में भी कहा गया है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविद, स्त्री आप संसार की रचयिता हैं। स्त्री को हम ऊर्जा का स्रोत, स्त्री शक्ति, प्रेम, संयम व बलिदान का प्रतीक है। A famous quote comes to my mind given by Margaret Thatcher. If you want something said, ask a man. If you want something to be done, ask a woman. This day, we all of us have gathered to celebrate the power of being a girl, to motivate our daughters and to give them their rights. Over so many years, our country has been progressing in the girl-child empowerment by saving the girls from female infanticide, their education and right to equality. To some extent, a lot of government schemes like Beti Bachao, Beti Padhao have come and they have been successful in achieving most of these aspects. But today, in my opinion, we should be adding one more right, Beti Bachao, Beti Padhao, Betiyon ko samman dilao. That is the right to respect unless and until the girls are not being given respect and due regards, however educated they may be, whatever position they reach, all these issues get failed. Respect of a woman or a girl, that is one of the most important right of each one of us, whether we are a homemaker, whether we are a professional, a teacher, a doctor, a student, an illiterate, or a highly educated person, irrespective of the social status, irrespective of our education, all of us have the equal right to get respect. So today, not only the gender-based issues are important, but respect of a woman at their workplace, at their home, and at the institution should be the most important matter to be taken seriously. I really hope and wish that our young minds, including all our daughters and sons, they are going to pay attention to this and they are going to respect their mothers, their sisters, their fellow mates, and their female colleagues, whoever is there in playing any role in their life. Today, our girls are rising to greater heights in all the fields of life, whether it is education, science sector, sports, space, politics, literature, arts, corporate sector, business, or defense sector, and making us proud in all the fields. In fact, Indian women, they have played a major role in the development of the society and progress of our nation globally. So to celebrate the Daughters' Day and the importance of a girl child in the society, we have chosen the topic of webinar, that is Girl Child, the Backbone of Indian Progress. To celebrate this occasion, I would like to dedicate a self-written poem to all the daughters and to all the females who are there in the audience. Though I'm not that much good writer like my students, but still I've tried my best.
लड़की हूं मैं जनाब, ये मेरी पहचान है। ईश्वर का इस सृष्टि को ये सबसे खूबसूरत वरदान है। देवताओं में भी तो सबसे प्रथम देवी का ही स्थान है। जन्म से लेकर मरण तक सदियों से देती रही ये त्याग व बलिदान है। फिर भी पूछती हूँ मैं, क्या दिलाया आपने इस समाज में मुझे वही सम्मान है? जहां पली बड़ी मैं उस घर में कैसे लिया जाता मुझे पराया मान है। क्यों कहते हैं सब लोग कि कन्यादान ही सबसे बड़ा पुण्य का दान है? ये बेटियां ही तो हैं जो हर त्योहार की शान है। ये तो फूल है हर बगिया की जो बनाए घर को गुलिस्तान है। ये बेटियां ही तो हैं जो पराया धन नहीं, स्नेह व अपनेपन की खान है। इन बेटियों से ही तो इस संसार में खुशियों का आदान प्रदान है। नमन है उन सभी बेटियों को जो इस देश को बनाती महान है। नमन है उन सभी बेटियों को जो इस देश को बनाती महान है। Thank you. So now, without taking much of your time, I would like to introduce our most popular and one of the most expert speaker of the day. We are very much honored to have our special guest speaker for today's webinar, Dr. Anshu Joshi, who is Assistant Professor and Media in Charge, School of International Studies, JNU. Dr. Anshu Joshi did her MA, MPhil and PhD from School of International Studies, JNU. She is a recipient of gold medal in BA from Vikram University, Ujjain. Dr. Anshu is a doctorate from Diplomacy and Disarmament Division, School of International Studies, JNU, and works on issues related to bioterrorism, terrorism, diplomacy, social and political issues. She has over 100 academic and popular articles published in reputed international and national journals, magazines, newspapers, and websites. She is a regular TV panelist on many news channels. She has worked with All India Radio during her student days. She is also the writer of the book, JNU में एक लड़की रहती थी, which has achieved many accolades and appreciation across the nation. This book has been felicitated, translated, and published by Gujarat Sahitya Academy, Government of Gujarat in Gujarati. Dr. Anshu's latest book, Agni Pakhi, is dedicated to the dynamic Indian woman, which is a collection of stories based on women empowerment. So we could not have thought the most suitable speaker for today's session. So without taking much of your time, I would now invite Dr. Anshu Joshi to take over the session and deliver the insightful talk for today's webinar. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Professor Nautiyal. I hope that I'm audible to all. Can someone please? Yes, ma'am, you are audible. Thank you. Thank you so much. दुनिया को रोशन करती हूँ, मैं बेटी हूँ, दिया बनके जलती हूँ. Respected Principal Dr. Agrawal, Dr. Mishra, who is the program officer of this wonderful webinar, Dr. Sharma, Dr. Nautiyal, and the dynamic team of NSS Unit Deshbandhu College, Delhi University. Thank you all for inviting me to share my thoughts on such a relevant topic and such a relevant day. I myself believe, being a woman, that a girl is basically the backbone for any country, forget India. So today we are going to discuss the topic as in the role of Indian girl child in the progress of India as a nation. And it's the right, most apt time when we all are struggling from, coming out of the third wave of COVID-19. And on the other hand, we have a huge mission and vision of making India Atmanirbhar. We are talking about Atmanirbhar Bharat, and we are talking about Vishwaguru Bharat. We are trying to make India as a global power. And we cannot ignore, we cannot forget the role of Indian women, Indian girl child in this entire vision, in this entire mission. So apart from this all, with over 48% women, India is actually the home of almost 17 to 18% of the total number of women in the world.
So we are one of the most populated countries in terms of women population. And the wonderful thing is that we are a hub of almost 20% of the young girls in the world. So the developments and changes in the lives of these women or girls, socially, economically, and culturally, are not only important for our progress, as in the development of India, but it's essential for the economic and other kind of developments of world as well. And to understand this, we need to understand few things conceptually. We have to look at our past and then present and then future. तो प्री वैदिक काल से लेकर यदि आप आजाद भारत की ओर देखते हैं, मैं दोनों ही भाषाओं में बात करती जाऊंगी, तो भारत के इतिहास को जब आप देखते हैं तो कन्याओं की, नारियों की गौरव गाथा से हमारा इतिहास बिल्कुल भी रीता नहीं है। तो गार्गेयी, मैत्रेयी, सीता के जमाने से लेकर रानी लक्ष्मीबाई और रानी गांधील्यू की तरफ आप देखिए, और फिर आप आ जाइए आजाद भारत में तो आप पाएंगे किरण बेदी को, सुचेता कृपलानी को, इंदिरा गांधी को, कमलजीत संधू को, फातिमा बीबी को, बछेंद्री पाल को, मदर टेरेसा को, और ऐसी कितनी सारी भारतीय स्त्रियां रही हैं, भारत की बेटियां रही हैं, लड़कियां रही हैं, जिन्होंने पुरुषवादी समाज की सोच को ठेंगा दिखाते हुए अपना नाम पूरे विश्व में अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, नेतृत्व क्षमता की वजह से, सामर्थ्य की वजह से स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। आज तक उनका नाम वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के अपने अपने क्षेत्रों में उदाहरण के रूप में लिया जाता है। और यदि आप भारत की ओर देखें तो जब 90 के दशक में एक बदलाव की बयार आई, हमने ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया, हमने इंटरनेट के युग की ओर कदम बढ़ाया, तो इसके बाद कहीं ना कहीं भारत में एक विकास की खिड़कियां खुली और देश में कंप्यूटर और अन्य प्रकार की जब टेक्नोलॉजी का विकास शुरू हुआ, टीवी युग का प्रादुर्भाव हुआ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा, बड़े उद्योगों की स्थापनाएं हुई, अलग अलग प्रकार के उद्योगों की, अलग अलग प्रकार के उद्यम की, कामों की स्थापना हुई, तो निश्चित तौर पर भारत ने फिर विकास की नई सीढ़ियां चढ़नी शुरू हुई की। और इसमें कहीं ना कहीं जब हम भारत की बेटियों की ओर देखते हैं, हम अपनी बच्चियों की ओर देखते हैं, स्त्रियों की ओर देखते हैं, तो उनका एक एपिसेंट्रल योगदान रहा है। आज भारतीय महिलाओं की वजह से इस नव विकास की बयार का आनंद हम सभी ले रहे हैं, हम नहीं भूल सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैंने डॉक्टर नौटियाल की कविता सुनी, बहुत सुंदर कविता, बिल्कुल सही बात, बेटी पढ़ानी भी है, बचानी भी है, सम्मान भी दिलाना है। मैंने हर्ष की कविता सुनी, तो कहीं ना कहीं लेकिन एक चीज है कि हमारे समाज में, हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं एक ये भावना आ गई थी कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कमतर है। लेकिन जब हम अपने इतिहास की ओर नजर डालते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बीच में कहीं जब मुगल काल आया है और जब बाहर से जो शासक है वो हमारे देश में आए हैं और हमारी सामाजिक संरचना में, हमारे रहन सहन की शैली में जब परिवर्तन आया है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी पहले पर्दा प्रथा नहीं थी, मुगल काल के बाद हमारे यहाँ पर्दा प्रथा आई है। हमारे दहेज प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे। ये दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं जब मुगल काल और दूसरे शासकों के काल भारत में शुरू होते हैं तो वहां से हमारे यहाँ पर आप देखना प्रारंभ करेंगे। तो हमारी मानसिकता में ये एक परिवर्तन आया और इसी मानसिकता में आज परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और यहीं पर पूरी समस्या की जड़ है। अदरवाइज इफ यू सी एट अ प्रैक्टिकल लेवल, एट ग्रास रूट लेवल, look at our families, be it our mother or our sisters or our bhabis or our daughter-in-laws or our daughters, they are the epicenter of everything. तो जैसा कि डॉक्टर नौटियाल ने कहा कि हर त्योहार की शान ही हमारी बेटियां हैं। अगर घर में लड़कियां नहीं हो तो कोई भी त्योहार सूना लगता है, घर की शादी ब्याह सूने लगते हैं। हमारे यहाँ के जितने शगुन संस्कार होते हैं वो बिना महिलाओं के हो ही नहीं सकते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है। अब इसमें जब धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव आता गया तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां हमारे सामने उभर कर आई हैं, लेकिन जब हम अपने वास्तविक धरातल पर देखते हैं यहाँ पर, तो बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका आपको दिखाई देती है। हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र को ले लें, हम राजनीति के क्षेत्र को ले लें, हम आईटी के सेक्टर को ले लें,
हम एकेडमिक्स को ले लें, हर जगह आपको भारतीय बेटियां एक नेतृत्व क्षमता के साथ परचम लहराती हुई दिखाई देती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम स्त्रियों का सम्मान नहीं करते या हम लड़कियों का सम्मान नहीं करते। एनएसएस की टीम ने एक बहुत अच्छा वीडियो प्रस्तुत किया कि हम अगर लड़का बन जाएं तो आप क्या पढ़ने देंगे? आप देशबंधु कॉलेज की पहले ही छात्राएं हैं, आपके पिताजी आपको पढ़ने दे रहे हैं, नौकरी भी करने देंगे और आगे भी पढ़ने देंगे। आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल फितूर निकाल दीजिए। हाँ, कहीं कहीं अभी भी जब हम देखते हैं तो कई गांवों में, कई शहरों में भी मानसिकता के स्तर पर ये बदलाव लाने की जरूरत है, और इसके लिए तो आप सभी काम कर ही रहे हैं। तो हमारी बेटियां आज तो उच्च शिक्षित हो रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, अंतरिक्ष यात्री बन रही हैं, उच्च पदों पर आसीन है। मैं यहाँ जेएनयू में पढ़ा रही हूँ, डॉक्टर नौटियाल है, डॉक्टर शर्मा है, डॉक्टर मिश्रा है, हम सभी आपको पढ़ा रहे हैं। और हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे घर के लोगों ने हमें आगे बढ़ाया कहीं ना कहीं, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे परिवार हमें पीछे खींचते हैं। हमारी शक्ति है हमारा परिवार, हमारी बेटियां नहीं है हमारा परिवार। आज की बेटियों को भी ये बात समझने की जरूरत है, और परिवारों को ये बात समझने की जरूरत है कि बेटियों के बिना जीवन में कोई आनंद नहीं। तो पराया धन नहीं है वो, आपका अपना एक बहुत बड़ा धन है। आपके घर की लक्ष्मियां हैं, सरस्वती हैं, और इनकी सुरक्षा और हित रक्षा के लिए भारतीय संविधान तो खड़ा ही है। और इसीलिए आज हम सब राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मना रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि जब हम भारत की प्रोग्रेस की तरफ देखते हैं, जब हम भारत के विकास की ओर देखते हैं, तो उसमें बेटियों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है, भूमिका है। क्योंकि वो जो सीधे सीधे कर रही हैं, उसके अलावा वे पुरुषों की भी कहीं ना कहीं सहायता करती हैं। तो आज इस कार्यक्रम में जितने पुरुष जुड़े हुए हैं, वे मुझे बता दें कि यदि उनके घर में उनकी बहनें ना हो, बेटियां ना हो, भाभियां ना हो, माएं ना हो, पत्नियां ना हो, तो क्या वे यहां तक पहुंच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? तो मुझे कुछ सर ऐसे ऐसे मना में हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, संभव ही नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में अपने परिवारों की, अपने समाज की संरचना इसी तरह की है। तो राजस्थान में इस तरह से होता है कि स्त्रियां थोड़ा पीछे चलती हैं। तो मैंने एक बार स्मृति ईरानी जी को भी सुना था, तो बिल्कुल एप्ट जवाब यही है कि स्त्रियां क्यों पीछे चलती हैं। यदि पुरुष गलती से गिर जाए तो हम संभालने के लिए पीछे हैं, इतनी शक्ति हमारे अंदर है, इसलिए हम उनको सहारा देते हुए चलती हैं। लेकिन हाँ, आज अपने समाज में इस प्रकार के भी संगठन उभरे हैं, इस प्रकार के भी कुछ लोग सामने आए हैं जो शायद ये समझते हैं कि सशक्तिकरण का या बेटियों को आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि आप उन्हें वे कम कपड़े पहने तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या वे यदि स्वच्छंद जीवन जीती हैं या परिवार से मुक्त होकर जीवन जीती हैं, तो ये एक वांछित बदलाव है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि यदि एक बेटी के रूप में, एक लड़की के रूप में, एक स्त्री के रूप में मुझे मेरे देश को योगदान देना है, तो ये सारे आउटलुक से कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपने यहां से किस तरह से अपने देश को योगदान दे पाती हूं, मैं अपने उद्यम से, मैं अपनी क्षमता से किस प्रकार से अपने देश को योगदान दे पाती हूं, ये समझने की जरूरत है। तो अगर मैं होम मेकर हूं तो भी, और अगर मैं एक प्रोफेशनल हूं तो भी, यदि मैं एक लड़की हूं तो मेरा अपने परिवार पर, समाज पर पूरा पूरा अधिकार है, दायित्व है, और मेरी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये सभी लड़कियों को समझने की जरूरत है। और आज जब आप अपनी बेटियों को देखते हैं तो घर के सीमित दायरे में बंधी हुई नहीं है, और बहुत आगे बढ़ रही है, हर दिशा में आगे बढ़ रही है, और इन्हीं से हमारा देश ताकतवर बन रहा है। तो आज जब हम विभिन्न योजनाओं को भी देखते हैं, तो उज्ज्वला योजना हुई, या महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, या लाडली लक्ष्मी योजना जैसे चल रही हैं, तो ऐसे कई जतन, ऐसे कई प्रयास भारत सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं कि यदि मानसिकता के स्तर पर या किसी परिवार की आर्थिक स्थिति यदि इस प्रकार की नहीं है, तो उस स्तर पर इस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकें और कुरीतियों को भी दूर कर सकें। So we cannot deny the fact that the future of India belongs to the daughters of India. And today when we talk about Atmanirbhar Bharat,
Do you think that this vision can be fulfilled without the active contribution of Indian girl child? No, not at all. Their active, their indirect, all kind of contribution, their economic contribution, their psychological contribution, their physical contribution, their mental contribution to this country is impeccable. We can't even imagine that how they support their families, the society, and the nation by the end of the day. So there is kind of a silent revolution that we all are observing today in our country. And for that matter, we have so many names today. If you look at the contemporary India, we have Radha Bhatia, we have Mallika Srinivasan, we have Priya Paul, we have Shehnaz Hussain, we have Ekta Kapoor, we have so many other women who are contributing immensely through their different skill sets to the economic development of this country directly. We have Indra Krishnamurthy. You popularly know her as Indra Nui. We have Naina Lal Kidwai. We have Sania Mirza. We have so many other such Indian daughters who have made this entire nation proud of their role and their contribution. Then we have so many writers. We have so many entertainers. So whenever you just think of Indian music, Lata Mangeshkar immediately comes in front of you. Just think of her. Indian dance. And there are so many daughters of India who have made India proud at international level because of their contribution in the field of dancing and music. और मैं ये सारी बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूं. According to the Reserve Bank of India, 6% of the startups and entrepreneurship related works have been led solely by Indian female founders, and it's a big achievement. So even if you look at rural India, you look at urban India, the situation nowadays is same. भारत की हर बेटी में वो जज्बा है कि वो लड़ सकती है, तो वो आगे बढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ती है और उसमें कूट कूट कर जोश खरोश दम भरा हुआ है और वो समय आने पर अपनी परिवार की हर तरह से सहायता भी करने से पीछे नहीं हटती. और यही तो भारत के सुनहरे भविष्य के लिए चाहिए और यही तो वो चाबी है जिससे भारत विश्व में एक बार फिर विश्व गुरु बनने की, ग्लोबल पावर बनने की राह पर अग्रसर है. So in this entire, journey of empowerment, there is one more very important thing that we should not forget. So we, the Indian women, the daughters of India, the girl child, we are very dynamic, we are flamboyant, we are powerful, we are emotional. And we must not forget that we are the bridge between past and future. So I see a lot of misunderstanding in our new generation about our past and the role of Indian girl child or girl child in our society. And as I said, that when we look back at our past, especially during pre-Vedic and Vedic era, we see that the daughters of India or the girl child had the most important role to play in each and every aspect of our life. तो हम वो कहीं बीच में गुम हो गए हैं और वो जो कुरीतियां हैं वो हमने अपनी मानसिकता में बैठा ली है और आज हमें स्वयं को सबसे पहले उससे मुक्त करने की आवश्यकता है. तो हम ये मानना ही बंद कर दें कि लड़कियां कमजोर है, बेटियां कमजोर है. पहली चीज तो ये, क्योंकि बेटियों से ज्यादा, लड़कियों से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं. दूसरी चीज, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो बेटियां हैं वे भावुक होती हैं.
वो भावुकता अपने आप में शक्ति है, परिवार अपने आप में शक्ति है, समाज अपने आप में शक्ति है, ये हमें समझने की जरूरत है. So with the power of our past and our culture, we have to keep walking and we have to explore the new milestones for ourselves, our families, our societies, our nation. तो जो भारत की बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनी हुई, अपने आप में सबसे अनोखी हैं. लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, अन्नपूर्णा भी है, काली भी है समय आने पर. अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की धुरी हैं. बहुत सरल हैं, भावुक हैं, लेकिन उतनी ही टैलेंटेड भी हैं. अचार भी बनाना सीख लेती हैं, मिसाइल्स भी बनाना सीख लेती हैं. वे जानती हैं कि पूरा आकाश उनका है, पर अपने जड़ों से जुड़ी रहती हैं. अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, लड़ती भी हैं, पर ये भी जानती हैं कि पश्चिमी सभ्यता के आईने से हमें अपने आप को नहीं देखना है. हमारे परिवार, हमारी जिंदगी अलग है. और वे ये भी जानती हैं कि अपने अपने परिवारों में कहीं ना कहीं वे अपने परिवारजनों के हृदय में बसती हैं, आत्मा में बसती हैं, शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं. और उनका वो जो अग्नि तत्व है, वो तो उसको विलक्षण बना देता है. मैंने अग्नि पाखी इसी अग्नि तत्व को लेकर लिखी है. तो हमारे घरों में दादियां, नानियां हो या एयरफोर्स के विमान उड़ाती अपनी पायलट हो, घरों की भाभियां हो, प्रोफेसर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, हमारी जितनी सैनिटेशन वर्कर्स हो, ये सब भारत की बेटियां हैं. तो जो स्त्रियां हैं वे भी तो कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड रही हैं. उन्हें परिवारों से प्रोत्साहन मिला, सरकार से प्रोत्साहन मिला, वे अपने आप भी आगे बढ़ी तो यहां तक पहुंची. और आज भारत के चौतरफा डेवलपमेंट के लिए वे सभी अपनी अपनी अग्रणी भूमिका अपने अपने स्थान पर निभा रही हैं. तो बस 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी. परिंदा क्यों बनना तो पूरा आसमान बन, परिंदा क्यों बनना तू पूरा आसमान बन, एक पन्ना क्यों बनना सोचती है तो पूरी दास्तान बन. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am, for such insightful talk. There was so much to learn and explore. We feel immense pleasure that we got a chance to listen to you. Now we will have a question and answer session. For that, I request all the volunteers to kindly drop their questions in the chat box. I'm repeating, if anyone has any questions, they can put their questions in the chat box. So ma'am, we have a first question from Harsh. He says, what's your views about how girl education helps to reduce the number of girl child marriage in society? हर्ष, बहुत ही अच्छा प्रश्न है. ये कुरीति रही है हमारे समाज में, लेकिन जब हम अपनी बच्चियों को शिक्षा के मार्ग पर ले जाएंगे और उनके साथ साथ उनके परिवारों को भी, तो सभी को ये चीज समझ में आती है कि भारतीय कानून और न्याय व्यवस्था के अनुसार जो बच्चियों का विवाह है या जो चाइल्ड मैरिज है वो एक कानूनन जुर्म है एंड इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस. तो वो बच्चियों को भी तभी समझ में आएगा जब वे स्वयं शिक्षित होंगी और तब वे अपने अधिकार के लिए सजग होकर इसके लिए लड़ भी पाएंगी और न्याय भी प्राप्त कर पाएंगी. इसके साथ साथ उनकी जो माएं होंगी या भाभियां होंगी या बहनें होंगी, निश्चित तौर पर उनको भी ये बात समझ में आएगी. तो इस पूरी मानसिकता में ही बदलाव आएगा. फिर धीरे धीरे करके सब ये सोचेंगे कि भाई हमें चाइल्ड मैरिज करनी ही क्यों है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कुरीति है, इसका हमें अंत करना चाहिए. और ये शिक्षा के ही मार्ग से माध्यम से संभव है.
Thank you, ma'am. We have a second question from Deepika. She asks, what do you think are the barriers to access education for girls in India and how can we overcome them? बहुत अच्छा प्रश्न है रोहित का ये। अभी भी कई परिवारों में, कई जगहों पर हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक या आर्थिक कारण होते हैं जिसकी वजह से बेटियों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होते हैं। सामाजिक कारण अपनी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, जहां पर कुछ परिवारों में अभी भी ऐसा भेदभाव किया जाता है कि लड़कियां हैं तो उनको कम पढ़ाना है या उनसे नौकरी नहीं करवानी है। लेकिन ऐसे कुछ ही परिवार बचे हैं। मैं जब अपने आसपास देखती हूँ, मैं स्वयं एक बहुत ही छोटी सी जगह से हूँ और यहाँ तक पहुंची हूँ, तो वो मानसिकता काफी कुछ बदल चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ परिवारों में वो रूढ़िवादी परंपराएं या सोच है। तो एक तो वो कारण है, तो ये सामाजिक कारण है, और एक आर्थिक कारण है। कई बार परिवार चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, कुछ बने, लेकिन ऐसे आर्थिक व्यवधान आ जाते हैं जिसके लिए स्कूली शिक्षा के बाद, विशेषकर उच्च शिक्षा के समय पर उन्हें थोड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए तो भारत सरकार ने अब कई ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिसके माध्यम से जो हमारी बेटियां हैं वो मुफ्त में अच्छी और बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। तो सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और सरकार के स्तर पर जब हम सभी मिलजुल कर प्रयास करें इस दिशा की ओर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्द नियर फ्यूचर में पूरी तरह से दूर हो सकती है। Thank you, ma'am. We have another question. Mansi says, Mansi says, what is your understanding of equal opportunities for girls and how do you think we all are working towards achieving it? भारत के संविधान ने ही कभी भी पुरुष और महिला में फर्क नहीं किया है। यही कारण है कि 1947 में जब हम स्वाधीन हुए मानसी, तो स्त्रियों को, लड़कियों को शुरू से ही वोटिंग राइट मिला पुरुषों के समान। जब आप इसके विपरीत पाश्चात्य जगत की ओर देखते हैं तो ब्रिटेन में और अमेरिका में इसके लिए महिलाओं को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के उन्हें राजनीतिक अधिकार, वोटिंग राइट्स मिले। तो हमारे संविधान ने हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रखी हैं। अब आवश्यकता यह है कि अपने परिवारों के स्तर पर, अपने समाज के स्तर पर जहां जहां पर भी रूढ़ियां व्याप्त हैं उन्हें हटाते हुए हम अपने संविधान को, अपनी संवैधानिक व्यवस्था को लागू करवाते हुए इस इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रोविजन को ग्रास रूट लेवल तक लेकर के जाएं। और निश्चित तौर पर आज का भारत मुझे उस दिशा में काफी अग्रणी भूमिका में नजर आता है। Thank you, ma'am. We have a last question from Harsh. He asked, what's your views about how girls can't achieve their dreams and goals after marriage and what is the solution for it? हर्ष, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण बैठी हूँ। मैंने JNU से मास्टर्स, MPhil, PhD किया है। मैंने शादी के बाद अपनी PhD सबमिट की। मेरा बेटा भी हो गया था और मुझे अपने परिवार से पूरा सपोर्ट मिला। तो ये भी एक मानसिकता जो हमने बना ली है कि अगर शादी हो गई तो फिर लड़की कुछ नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये हम सभी को, लड़कियों को, लड़कों को, आप सबको समझने की जरूरत है कि अपने भारतीय परिवार इस तरह के नहीं होते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ एक डोर में बंधे होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो शादी के बाद लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो शादी के पहले सोचती हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि शादी के बाद आपको गोल्स और क्लियर नजर आते हैं क्योंकि मैच्योरिटी के लेवल पर, उम्र के लिहाज से आप समझदार हो जाते हैं, तो आपको अपने कई बार ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नजर आते हैं। तो इसके समाधान की तो कोई बात ही नहीं है। यदि आप आज के समाज को देखें, अपने परिवार को देखें, आप अपने आसपास नजर डालेंगे, आप लोग प्रैक्टिकली देखिए अपने आसपास, तो आपको अपने आसपास की लड़कियां शादी के बाद भी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। आज का जमाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी हो गई तो लड़की को घर बैठना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। Yes, ma'am. Thank you so much. I hope all of them got the answers. Moving forward, I would like to call Manasvi for a song. Over to you. Shivani, am I audible? Yes, you're audible.
Okay, thank you. So, hello everyone. Hi, my name is Manasvi Rajput. I'm a third year student of BA program and also the Women Empowerment Cell volunteer of NSS. So today I'm presenting a song with the title Pinjra Tod Ke. So I hope you all like it. So I'll start it. Just give me 2 seconds. सितारों में सितारा जो है मेरे नाम का चमका भी ज़मीं पे है ये रोशनी या है आसमां बिखरा भी जन्नत के साए जन्नत ले आए हैं बाहों में अब जिंदगी जी किस्मत की डोरी जो बांधी वो खोली जीने चली मैं अब जिंदगी पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है बाहें खोल के उड़ जाना है पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है बाहें खोल के उड़ जाना है ओले 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 ओ ओले 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 ओ वही हूँ मैं या हूँ नहीं अब कुछ फर्क सा है जीने में उतर गया सुकून से जो कोई कर्ज था इस सीने से जन्नत के साए जन्नत ले आए मेरे वास्ते ये कर लूं यकीन अब इस पल को इतनी दरखास्त है कि पल में कहीं गुम होना नहीं पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है बाहें खोल के उड़ जाना है पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है बाहें खोल के उड़ जाना है Thank you Shivani. Thank you so much for such a mesmerizing song. Moving forward, I would like to invite Anushka to highlight the achievement of Ministry of Women and Child Development by her presentation. Over to you, Anushka. Is my screen visible? Yes, it is. Okay. A warm greetings to everyone present here. Hi, my name is Anushka Chauhan, a volunteer of NSS unit Deshbandhu College. Girls and women have been subjected to centuries of discrimination in a patriarchal society.
that has been slowly changing, and there is an increased awareness about equality towards girl children and providing them with equal opportunity in society, for which the Government of India has taken numerous steps to ensure the equality of girl child. In respect to this, the Department of Women and Child Development came into existence as a separate ministry with effect from 30th January 2006. The ministry was established with the primary goal of filling gaps in state action for women and children in order to develop gender equitable and child centered legislation, policies, and programs. The vision of the ministry is to empower women so that they can live in dignity and contribute as equal partners in progress in an environment free of violence and discrimination, and well nurtured children with ample opportunities for growth and development. The mission of the ministry are to promote social and economic empowerment of women through cross-cutting policies and programs, mainstreaming gender concerns, ensuring development, care and protection of children, and also to create awareness about their rights. Next, the ministry's broad mandate is to promote the holistic development of women and children. The ministry formulates strategies, policies, and programs for the advancement of women and children, modifies laws, and supervises and organizes the efforts of both governmental and non-governmental organizations. Besides from this, the ministry implements a number of novel programs for women and children. These programs play a supplementary and complementary role to the other general development programs in the sector of health, education, etc. All of these efforts are aimed at ensuring that women are economically and socially empowered. The ministry has been implementing the world's largest, unique and most unique program of integrated child development services for the holistic development of children. It provides a package of services comprising supplementary nutrition, immunization, health checkup, and referral services. The ministry's recent key policy achievements include the universalization of ICDS and Kishori Shakti Yojana, the launching of a nutrition program for adolescent girls, the founding of the Child Right Commission, and the passing of the Protection of Women from Domestic Violence Act. The subjects allocated are welfare of the family, women and child welfare, and coordination of activities of other ministries and organizations, national nutrition policy, and promotion of development of voluntary effort on the subjects allocated to this department. The implementation of different acts has been done, like Immoral Traffic in Women and Girl Act 1956, the Dowry Prohibition Act 1961, the Commission of Sati Prevention Act 1987, implementation of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food, Regulation of Production, Supply and Distribution Act 1992. The implementation of United Nations Children Fund, Central Social Welfare Board, Food and Nutrition Board, Nutrition Extension, Rashtriya Mahila Kosh, the Children Act 1960, etc. has also been implemented. Now, talking about the achievements of the ministry in the pandemic, during the year 2020-21, the ministry undertaken various policies, initiative and plan intervention for the development, welfare and protection of women and children. A major part of the India's population, that is around 158 million, consists of children in the age group of 0 to 6 years.
and the ministry is administrating different schemes for the welfare and development of children. Anganwadi services is one of them. It represents one of the largest and unique programs for early childhood care and development in the world. Children in the age group of 6 months to 6 years, pregnant women, and lactating mothers are the beneficiaries under this scheme. The objective of the Anganwadi services are to improve the nutritional and health status of children, to lay the foundation for proper psychological, physical, and social development of the child, to reduce the incidence of mortality, malnutrition, and school dropouts, to achieve effective coordination of policy and implementation amongst the various departments to promote child development. There are 6 packages under this scheme, which are as follows. First, supplementary nutrition. Second, preschool non-formal education. Third, nutrition and health education. Fourth, immunization. Fifth, health checkup. And sixth, referral services. Here, it is showing the cost-sharing ratios between center and states. Also, the Anganwadi Services Scheme operates through a network of 7,075 operational projects, and as on 31st December 2020, 13.84 lakh Anganwadi centers are operational. The number of operational Anganwadi and mini Anganwadi centers reported as on 30th June 2020 is 13,83,955, and number of beneficiaries for supplementary nutrition program is 8.31 crore, and for preschool education program the number of beneficiaries are 1.62 lakh. Under the revised Anganwadi services, provision of 12,000 rupees per Anganwadi centers for construction of toilets in 70,000 government-owned Anganwadi buildings has been made. Along with this, 2 lakh new Anganwadi buildings to be constructed at the rate of 1 lakh Anganwadi buildings per year. Anganwadi centers are actively functioning during the COVID-19 pandemic as well. Anganwadi workers and helpers are actively involved in door-to-door survey, community surveillance, etc. during COVID-19. There are different social insurance schemes that has started for the Anganwadi workers and helpers, like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, and many other such schemes. Other miscellaneous initiatives also started under this scheme, like the Ministry of Women and Child Development supported construction of Anganwadi centers under multi-sectoral development program in minority concentration districts. Also, under SNP, different food items like khichdi, pongal, chapati, high protein biscuits, etc. were supplied to the beneficiaries. These food items are being prepared in Anganwadi centers by the Anganwadi helpers. Next scheme is the Poshan Abhiyan. It is the Prime Minister's overarching plan for holistic nutrition. It was set up for a 3-year period in order to achieve the goal of Suposhit Bharat. The main focus is on intervention having high bearing on nutritional status. The goal of this scheme is to achieve improvement in nutritional status of children, adolescent girls, pregnant women, and lactating mothers. This scheme also aims to reduce malnutrition in the country through a life cycle approach by the year 2022. At the national level, 18 ministries or departments have been brought together in an effort to reduce the prevalence of malnutrition. Ministry of Ayush will also provide support to the beneficiaries of ICDC and provide context-specific solution for holistic well-being of women and children. The help of technology is also being taken
To take this campaign forward, Anganwadi workers and female supervisors are given smartphones as a part of the Abhiyan. As of now, smartphones have been provided at 6.41 lakh Anganwadi centers. Approx 3.50 crore community mobilization behavioral change have been conducted up to October 2020. During Poshan Maha 2020, a series of 5 webinars on various nutrition related themes were held. My government also organizes a Poshan Abhiyan meme contest, a Poshan Abhiyan quiz, a share your recipe contest, and a healthy diet awareness campaign. Also, around 10 lakh workers have been trained up to March 2020. Next, the ministry started a scheme for the development of women and children, that is the National Crèche Scheme. It is being implemented as a centrally sponsored scheme through the states and the union territories with effect from 1st January 2017 to provide daycare facilities to children of working mothers. For this, funds are being provided to states and the union territories. The component of the scheme are daycare facilities are provided to the children of age group of 6 months to 6 years of working women who are employed for a minimum period of 15 days in a month or 6 months in a year. Daycare facilities includes sleeping facilities, early stimulation for children below 3 years and preschool, growth monitoring, education for 3 to 6-year-old children, supplementary nutrition and health checkups. The charges for the users are rupees 20 from BPL families, rupees 100 from families whose income is up to 12,000 rupees per month, and rupees 200 from families whose income is above 12,000 rupees per month. There are at present 3.02 crore children in the age group of 3 to 6 years who are beneficiaries of preschool education in Anganwadi centers. Under the Early Childhood Care and Education Scheme, pre-education kits are being provided to all the Anganwadi and mini Anganwadi centers across the country. Ministry has also developed age-appropriate activity books for 3 to 6-year-old children. There are other initiatives also which are started for the development of women and children, such as Country Program Action Plan 2018 to 2022, which was signed between the Ministry of Women and Child Development and UNICEF. Country Strategic Plan 2019 to 2023, which was signed between Government of India and UN World Food Program on 1st February 2019, and Poshan Tracker to track daily functioning of Anganwadis. Poshan Tracker includes preparing hot cooked meal for children as well as complete supply chain management of 41 child development take home ration. Next is the scheme for the adolescent girls. The Ministry of Women and Child Development implemented the Adolescent Girls Scheme under the Integrated Child Development Services. It aims at breaking the intergenerational life cycle of nutritional and gender disadvantage and providing a supportive environment for self-development. Next, for the child protection and welfare, the Protection of Children from Sexual Offences Rules 2020 was approved. The ministry also developed a short clip with the support from UNICEF. This clip was telecasted on Doordarshan and in the cinema halls for a period of 1 week from October 2019 for awareness regarding child safety. Ministry of Women and Child Development, Department of School Education and Literacy, and MHRD started showing Komal, which is a short film on child safety in every school to raise the awareness about child protection and safety.
The Ministry of Home Affairs has created an investigative monitoring system for sexual offences portal to ensure that investigation into cases under Section 4 and 6 of the POCSO Act are completed on time. The major components and the services under CPS, that is Child Protection Services Scheme, are statutory bodies, which includes child welfare committees, juvenile justice board, and special juvenile police units. Service delivery structure, which includes Central Adoption Resource Authority, National Institute for Public Cooperation and Child Development, State Child Protection Society. Institutional services, which includes children's home, specialized adoption agencies, open shelter, observation homes, special homes, place of safety, etc. The ministry has also released fund amounting 3.42 crore during 2020 to 2021 to all the states and union territories to conducting training programs in their respective states and union territories. For ensuring the safety of children, the Track Child and Khoya Paya portal is started by the ministry. It is a web-enabled MIS for timely tracking and monitoring the progress of a missing and found children. As on 31st October 2020, 12,360 police stations are making entries of missing or recovered children in the Track Child portal. Ministry has also signed an MOU with National Institute of Mental Health and Neurosciences. This initiative has been named as Samvad, in which an amount of 5 crore 19 lakh 11,160 rupees has been released to NIMHANS. Government has also started a campaign named as Beti Bachao, Beti Padhao. This campaign is started to prevent gender-biased sex-selective elimination, also to ensure survival and protection of girl child, and to ensure education and participation of girl child. The target group under this campaign are primarily young and newly married couples, lactating mothers, and pregnant women. A world without a girl is as impossible as world without water. With this quote, I would like to end my words here. Thank you so much. Thank you, Anushka, for the presentation. Moving forward, now I would like to call Gitika, a volunteer of our unit, to share her thoughts on this occasion. Over to you, Gitika. Thank you, Shivani. शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को मिल जाए किनारा। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं गीतिका देशबंधु कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है। आज की बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो क्षेत्र खेल हो या राजनीति, घर हो या उद्योग, राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडल हो या मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर देश की सेवा करने का काम कर रही हैं। लड़कियां, लेकिन इसके उपरांत आज भी वह अनेक कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियां उसके आगे बढ़ने का बंधन उत्पन्न करती हैं। पढ़े लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। अल्लाह, उनकी अक्ल का पर्दा जरा हटा, फिर अपनी बेटियों को जलाने लगे हैं लोग। बालिकाओं के साथ भेदभाव एक महत्वपूर्ण समस्या है जो शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा, देखभाल, सुरक्षा, सम्मान, बाल विवाह आदि में असमानता जैसे कई क्षेत्रों में फैली हुई है। बेटी तो है जग की जननी, हमें रक्षा अब इसकी करनी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस को राष्ट्रीय बालिका विकास मिशन के रूप में मनाना शुरू किया। यह लड़कियों की प्रगति के महत्व के बारे में पूरे देश के लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है।
यह समुदाय के अन्य सदस्यों और माता पिता के व्यवहारिक समर्थन के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में लड़कियों के सार्थक योगदान को बढ़ाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस सामाजिक लोगों के बीच उनके जीवन को बेहतर बनाने और समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव और शोषण को उस संगठन से पूरी तरह से हटा देना चाहिए जिसका सामना लड़कियों को हर दिन करना पड़ता है। बेटों से भी भली बेटी, क्यों जन्म से पूर्व उसकी बलि। समाज में लड़कियों के अधिकारों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक और सामुदायिक नेता नियमित प्रशिक्षण और मौलिक स्वतंत्रता के बारे में सार्वजनिक रूप से भाषण देता है। हर क्षेत्र में लड़की आगे, फिर क्यों हम लड़की से भागे। लड़कियों को अधिक ऊर्जावान, सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिलना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक सत्य और कानूनी अधिकारों से अवगत होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके सटीक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति के रास्ते ले जाओ। उन्हें जीवन में उचित अधिकार और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए धारा 2009 बाल विवाह निवारण अधिनियम, दहेज रेक्टम अधिनियम 2006 आदि सहित घरेलू हिंसाओं के कानूनों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमारे देश में 1/3 लड़कियां कुपोषित हैं। समाज में स्वास्थ्य सेवा 1 तक सीमित है और लैंगिक असमानता के कारण प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं विभिन्न बीमारियों और एनीमिया से जूझ रही हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर सब पूजनीय भी पहले नारी फिर नर, तो फिर क्यों नहीं देते लड़कियों को जन्म का अवसर। बालिकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने धन लक्ष्मी नामक एक योजना शुरू की है, जिसके तहत विलवीकरण, जन पंजीकरण, स्कूल में नामांकन और कक्षा 8 तक रखरखाव जैसी बुनियादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बालिका के परिवार को धन हस्तांतरण किया जाता है। शिक्षा अधिनियम ने बालिकाओं के लिए मुफ्त और आवश्यक शिक्षा प्रदान की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। इस अभियान के माध्यम से भारतीय समाज में लड़कियों के साथ असमानता की पहचान की गई। इस दौरान सरकार द्वारा सेव द गर्ल चाइल्ड संदेश के माध्यम से रेडियो स्टेशनों, टीवी, स्थानीय राष्ट्रीय समाचार पत्रों आदि पर कई तरह के विज्ञापन चलाए जाते हैं। गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन भी एक साथ आते हैं और इस उत्सव में भाग लेते हैं। बालिकाओं के प्रति सामाजिक कलंक के विरुद्ध संघर्ष करना। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, एक एहसास का नाम बेटी है, एक विश्वास का नाम बेटी है। क्या बताऊं क्या कीमत है बेटी की, हर एक सांस का नाम बेटी है। परमात्मा की तरह अद्भुत महान होती हैं बेटियां, सचमुच खुशियों का रोशनदान होती हैं। क्या होता है जीवन, क्या होता है सांसें, बातें प्यारी प्यारी कैसे सुनोगे, जब बेटियां ही ना होगी धरा पर तो बताओ किलकारी कैसे सुनोगे। धन्यवाद। ओवर टू यू शिवानी। Thank you, Ritika. Moving forward, on this occasion of National Girl Child Day, we, the volunteers of NSS unit, Deshbandhu College, have organized a donation drive to initiate a helping hand to all little girls, because when you educate, you educate a nation. For that, I would request Himang to please share his screen and present a video. Over to you, Himang. समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों।
Thank you, Hemang. We should all understand that there should be no discrimination among girls and boys. Helping and educating girls can help them face the problems in the society. Now, you all are requested to kindly fill the feedback form given in the chat box, and for any further update, you all can follow us on our social media handle @nssunit.dbc. Social media links are mentioned in the chat box. Moving forward, now I would like to request our teacher coordinator, Dr. Monica Sharma ma'am, to give vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, Shivani. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Thank you, everyone. As we started our event by the statement, जिस देश में होता है नारी का सम्मान, वह देश होता है स्वर्ग के समान. We celebrate National Girls Child Day to raise awareness among us regarding inequalities, discrimination, and exploitations faced by the girls in our society. On this day, I would like to thank everyone who are present here to achieve these goals of National Girls Child Day with us. First of all, I would like to welcome and thanks our guest speaker, Dr. Anshu Joshi ma'am, who take out her precious time and enlighten us with very interesting thoughts about girls and how we can overcome the difficulties faced by the girls. I express my heartfelt thanks to Professor Rajiv Agarwal, Principal, Deshbandhu College, to give us this opportunity to organize this event and motivating us at every step so that we can achieve our goals. And he also take initiatives to every girl student of our college to take participation in various activities. So thanks to Professor Rajiv Agarwal sir for that. I would also like to thank our Vice Principal sir, Professor Kamal Kumar Gupta sir, for his constant support. I owe my special gratitude to our program officer, Professor Ruby Mishra ma'am, for guiding us and for your kindness, vision, and commitment at every event which we organize. I would like to thank Dr. Aparna ma'am for giving us such a nice poem and welcoming our chief guest. I also would like to thank all the distinguished members of Deshbandhu College who spare their important time to attend this event and making this event a grand success. I would also like to thank all the teacher coordinators for their support at every step. Every event of NSS won't be possible without the hard work of our volunteers and the NSS team. So I would like to give a special thanks to all the student volunteers and all the NSS team members to make these events, not only this event, but all the events a very success and meaning to the nation. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. To end this event on a peaceful note, I would like to invite Sakshi for Kalyan Mantra. Over to you, Sakshi. आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी नेत्रों को बंद कर और हाथ जोड़कर कल्याण मंत्र का ध्यान कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Sakshi. Now you all are requested to please turn on your camera so that we can take a picture.
I guess it's done. Moving forward, we cannot all succeed when half of us are held back. We call upon our sisters around the world to be brave. To them, brace the strength within themselves and realize their full potential. With this quote, I thank all the participants for joining this program and making this special event unforgettable. You all can leave now. Thank you all again.